on. So today I'm going to discuss this tight bind approximation. So tight bind approximation is basically based on linear combination of atomic orbitals. Okay, so this tight band approximation is basically what? Based on linear combination of atomic orbitals. Okay, in short we call it LCAO. Okay, now we use atomic orbitals. Okay, and we we combine these atomic orbitals. Okay, and we get a wave function. Okay, which is corresponding to the crystal, and corresponding to this wave function we solve the Schrodinger equation and we calculate the energy band diagram of a system. Okay, now before we start tight binding approximation, okay, let me tell you something. Okay, so we know. Sir, so can you repeat the last statement? ये नेटवर्क चला गया था. हाँ, तो मैं इसमें से ये बात कर रहे हैं कि टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं. ओके, उनको फिर कंबाइन करते हैं, उनके सुपरपोजिशन से वी गेट ए वेव फंक्शन विच इज करस्पॉन्डिंग टू द क्रिस्टल, और फिर उस वेव फंक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करके हम लोग ई के एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं. ओके, so ऐसा क्यों करते हैं? Why this is called tight binding approximation? Okay, so first of all, if I say take a atomic orbital, okay, so in atomic orbital what we have discrete energy levels. Okay, so this energy level, suppose this is a potential well, okay, of an atom of ion, and we have a discrete energy levels. Okay, now of the energy levels of a atom, okay, say this is atom 1, they are discrete. Okay, now I have one more isolated atom. Okay, so they have a discrete energy levels. Now when I combine these two atoms, okay, and I form a molecule. Okay, so what will happen? So when we combine these two atoms, okay, say this is atom 1, this is atom 2, okay, and they are homonucleus, similar type of atoms, and so this is a molecule. Okay, so we know from the chemistry, okay, when we combine atomic orbitals, okay, so what will happen when these atoms will combine? Okay, so this energy level will split in two levels. Okay, each level will split in two levels. Okay, and the upper level, okay, the top level which has a higher energy, that is called anti-bonding. Okay, anti-bonding orbital, okay, and what is this one? This is the bonding level, bonding. Okay, so when I make a molecule out of atom, okay, so each level will, what will happen? They will become split. Okay, because of the, now when you are isolated, they have a different potential, electron is in different potential. When you bring them together, okay, the potential changes. Okay, and because of this potential changes, there is shift in energy. Okay, now suppose in a crystal, okay, so in a crystal, what is the situation? We have, it's a one chain of atoms. Okay, so these are atoms. Okay, so these are atomic wave functions. Okay, atomic wave functions. Okay, now when I bring this n atoms together, in that condition what will happen? In that condition what will happen, that each of these level, okay, each of this level, okay, they will become split in n lines. Okay, n lines.
So finally what will become, this will become a band, okay, which has some, okay, so this is a gap, so this is some width, okay. So this each level, okay, now when you combine this, bring all the atoms together, okay, this become band, okay. So now suppose there are, I have drawn here 4 levels, so there will be 4 bands, okay. There will be, so there will be one more band, okay, the top of the one more band, okay, so on, okay. Now what happens when I bring this atom together, okay, the overlap, okay, the overlapping is very low, overlap is low for inner energy, inner energy level, जो अंदर के energy level है, हाँ क्या सर हुआ, ये लेफ्ट साइड में जो मतलब एनर्जी का एक वो उस पूरे को बैंड्स कहते हैं। ये जो जितने लेवल्स बन गए वो बैंड तो बन गया, कंटिन्यूस बैंड बन गया, ओके okay, ओके so सर। each level become band, okay. Now जो इनर एनर्जी लेवल है, ओके, इनर एनर्जी लेवल के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, सो द विड्थ ऑफ दिस एनर्जी लेवल इज व्हिच इज स्मॉलर, ओके. सो एज यू गो अबव अप, ओके, इन एनर्जी लेवल्स, ओके, लाइक 1s 2s 2p, okay, so the energy width of 1s level will be small, lesser compared to 2s, and 2s will be lesser to 2p. So outer levels, okay, then we are in upper order, okay, their width will be high, okay. So because the overlap is greater extent for the outer side energy levels, okay. Now what tight binding approximation considers, okay, tight binding approximation basically considers these inner levels, okay, inner levels, okay. So with tight band approximation you can explain that insulator and semiconductor also, not, it is not true for metals, okay. So before we start, okay, let me write some approximation, okay. So here I think this is clear to you, okay. If we have a say a wave function of psi, say this is phi a, one atom, this is the phi b, okay, of 2 atoms, okay. So when we combine, okay, we can write the psi of a molecule like a phi a plus b phi b, okay. And now if these atoms, okay, if these atoms are homonuclear, okay, so if I'm making homonuclear molecule, okay, in that case what I can write, so this is my psi a psi b, okay. So I can write my psi as either a and b will be same for similar kind of atoms, so I can write this is a phi a plus phi b, okay, or I can write psi equals to phi a minus phi b, okay. This is for your bonding situation, and this is for anti-bonding orbitals. So phi a and phi b are wave functions. Yes, okay. So if there is a bonding, so what will happen, so this become like this, okay. So this is psi, okay, this will be phi a phi b, okay. There will be overlap between these two functions, okay. If it is an anti-bonding, so in that case what will become, they become like this, okay. So there is a no overlapping here, okay. So more overlapping means binding energy high, means energy level comes down, okay. And in this case there is a no overlapping, so this is your phi a and this is your phi b, okay. So this is your anti-bonding, okay. So what is the methodology in tight band approximation? In tight band approximation, what we'll do, we'll write the wave function of a electron in an atomic orbital, okay. And we will take superposition or summation of these all orbitals, and we write the wave function of your crystal, okay. So before that, let's write some approximation which we are going to use along with this LCAO, okay. Can I rub this one? Yes, sir. सर आप इसका रीजन क्या बताया, ये विद का? कौन सी विड्थ का? ये वाला? हाँ हाँ सर। इसमें जो आउटर लेवल्स होते हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग फंक्शंस में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, इनर में ओवरलैपिंग कम होता है, ओके.
वेव फंक्शंस में ओवरलैपिंग कम होता है एनर्जी लेवल्स में. So now let me write some approximations, okay, which I already told you along with LCO. Okay, so number one क्या है? Number one, so this approximation is valid. This approximation, okay, is valid whenever the motion of the valence electron, the motion of valence electron, okay, is influenced to a greater extent, okay, by the Coulomb potential of okay, of its parent ion, okay, then by other neighboring ions, okay. So what is the meaning of this statement? The meaning of this statement is there, okay. So I told you this tight bind approximation, okay. So tight bind approximation matlab we are assuming that influence of crystal potential, okay, the influence of crystal potential will be less compared to the individual potential of a parent ion, okay. What does this mean? Isko mita do kya? Wait a minute. Sir, 1 minute. Sir. Yeah. Okay, so this is one thing. Okay, sir. So this is the one thing that the parent atom influence will be more, okay, compared to this one, okay, and nearest neighbor influence will be less, and neighboring atom also will only take nearest neighbor, okay. So only nearest neighbor contribution okay will be taken account, okay, taken into account. So एक तो चीज है कि हम खाली पेरेंट एटम का पोटेंशियल लेंगे और नियर और नेबरिंग में भी ओनली नियरेस्ट नेबर का ही लेंगे, ओके. So this kind of situation is satisfied generally for all the electrons of solid insulators, okay, all the electrons of insulators. हाँ, So पहले वाला point एक बार explain. बता रहा हूँ, वही तो डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है. So in first potential what we are saying, okay, that we have atom, we have a chain of atoms, okay, see the length is Na, okay. If I take this is 0 atom, so we have n/2 atom this side, okay, n/2 atom we have this side, okay. Now we know what is the crystal potential, okay. So if you want to draw crystal potential, we have done last time. So this is the crystal potential, okay. If I take this one, okay, if I take this one, okay, so this is my crystal potential, okay. So say my crystal potential is say v naught r, okay.
Now this is crystal potential. Now we have individual potential of atom also. Okay, so individual potential I'm drawing for dotted line. Okay, so individual potential is just like this one. Okay, so these are individual potential. Okay, so if I take nth atom, okay, so I can write individual atoms contribution as a V naught R minus Rn. Okay, now what is R? Okay, so this is the atomic potential. Okay, so this is your atomic potential. And this one is your crystal potential. Okay, now what is this Rn? So suppose if I draw a lattice, okay, two-dimensional lattice. इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको रब कर दूं क्या? इसको एक पोर्शन रब कर देता हूँ मैं, ठीक है. So we have this. So say these are the atoms. Okay, so I choose one atom as my reference atom. Okay, and say this is my nth atom. Okay, this is my nth atom. Okay, and this is the position of electron. So I want to get the potential in this at this electron. Okay, so this is the p position of electron. Okay, and this wave vector is say r. Okay, so potential of this nth atom. Okay, your position is Rn at electron p. Okay, so this distance will be what? So say this is r, vector r. Okay, so this will be what? R minus Rn. Okay, so this is your atomic potential. Okay, and V naught R is your crystal potential. Okay, now I want to solve Schrodinger equation. Okay, and so that solving Schrodinger equation, what I need the wave function. Okay, and wave function. Sir, means at point P we are finding potential due to Rn atom. At potential P, the potential due to atom is this much. Okay, and this is your crystal potential. Okay. Okay. So now I want to write the wave function. Okay, so wave function I can write using LCAO, psi k. Okay, so writing LCAO, linear combination of orbitals. If I know the atomic orbital, so say atomic orbital is what? Atomic orbital is say psi k r minus Rn. Okay, so this is my atomic orbital psi naught. Okay, and there be this crystal wave function will be linear superposition of this. Okay, so this is a constant, say Ci. Okay, this is constant Ci, or say constant is Ck. Okay, so now I want to write now, because one more thing is there, because in the crystal हम crystal के अंदर हैं, and in crystal what this wave functions, this wave function should be Bloch wave functions. Okay, because there is a potential is periodic. Okay, so these wave functions should be satisfy the Bloch's theorems. Okay, so let me first write this wave function in terms of Bloch wave function. So instead of this Ck, okay, what I can write this is as the exponential, okay, iota k dot Rn, the position of atom. Okay, psi naught r minus Rn. Okay, so this is my crystal wave function. Okay, so we have to first confirm whether this potential satisfies the Bloch theorem or. Okay, so first equation is the wave function of the electron. Wave function of yes. This one. Okay, sir. Superposition of we are taking linear combination. Okay, so this is a wave function of electron due to one atom. Okay. Okay, so sir. So we are taking all orbital wave function. Okay.
ऑर्बिटल वेव फंक्शन मतलब क्या, जैसे आप पोटेंशियल बॉक्स सॉल्व करते हो ना, तो पोटेंशियल बॉक्स Yes, में sir. क्या वो आपका ऑर्बिटल ऑर्बिटल एटॉमिक समझ लो वो एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ओके, जिसका एनर्जी आपको पता होता है, ओके। नाउ उसमें क्या है, you are not considering the neighboring atoms, okay. Now what, in order to consider little bit neighboring atoms also, we are taking crystal potential, okay. So this is the atomic potential, atomic orbital potential wave function, okay. And so now I have the wave function. So let us first say whether it is follows Bloch theorem or no, okay. So since we have, say suppose this is CKR, this is CKR, okay. Now I'll take CKR plus, say this is RM, okay. RM suppose the periodicity. So what I can write this wave function as what? I can write this wave function as iota k Rn, okay. This will be psi naught R की जगह ले सकते हैं R plus RM, okay. So R plus RM minus Rn, okay. Now I can write this equation as iota k Rn से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को. So I have to subtract this quantity, okay. So this is n, okay, this is n. We are taking this for atom, okay, and for atom position. So now I can write this as a iota k Rn minus Rm, okay. क्योंकि मैंने यहाँ पे जोड़ा है इसको, मैंने यहाँ से इसको मैंने यहाँ से वापस माइनस कर दिया, okay. And similarly I can write this as a sin naught R, okay, R plus minus Rn, Rn minus Rm, okay. So now just look at that expression, okay. So if you carefully look at this expression, what is this? So this is iota k Rm, and what is this expression? Just see the definition of psi. Okay, very good. Okay, so this is your psi kr. Okay, this is your psi kr. Okay, so that means your psi k R plus Rm, okay, is equal to again this psi iota kr psi r, okay. So that means this your satisfies your Bloch theorems, okay. So now we are ready, okay. We have our wave function. हमको खाली क्या करना है, एनर्जी निकालना है, हमको श्रोडिंगर इक्वेशन निकालना है, एनर्जी निकालना है. Sir, this last expression psi kr कैसा हुआ? भाई पहले ऊपर जो लिखा है वहां पे यहाँ पे R होता है. Yes sir, R तो होता है. हाँ ठीक है, और क्या होता है? बस capital Rn. So let me write a definition, okay. So iota k Rn जो होता है, okay. If I have psi, if I have यहाँ पे Rn है और यहाँ पे Rn है, that is psi k R. आपकी यहाँ पे Yes, क्या, sir. यहाँ पे Rn नहीं, Rn minus Rm है, और यहाँ पे भी Rn minus Rm Yes है, sir. इसलिए ये भी psi Yes, sir. k R, okay. ओ उसी को पूरा मारो. Okay sir. So now let me again write the wave function, okay, and write the Hamiltonian. So Hamiltonian means we have a kinetic energy, potential energy. So we are solving this for crystal, okay. So we know that we have a crystal potential V naught R. So now I have to solve the Schrodinger equation, okay. S psi E psi, okay, and H I know what is H, 2m del square plus V naught R psi, okay, and say this is ek psi, okay. And psi k already we just now we written psi k are linear combination of orbitals, okay.
psi k r is what? Psi k r iota k rn psi naught r minus rn, okay, or this is n, ये है ना? Let me check. Okay, r minus rn. Okay, so we have now wave function, we have Schrodinger equation. Okay, इसको हल सॉल्व करना है हमको. So now सर हाँ बोलिए. सर ये जो V नॉट आर है ये क्रिस्टल पोटेंशियल है या फिर एटॉमिक पोटेंशियल? क्रिस्टल पोटेंशियल है. ओके सर. ओके, नाउ क्रिस्टल पोटेंशियल सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि एटॉमिक पोटेंशियल तो हम सॉल्व कर चुके हैं. ओके, फॉर पार्टिकल बॉक्स. ओके, एटॉमिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? अगर आपके पास हैमिल्टोनियन में यहाँ पर अगर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है प्लस एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी है, you operate on wave function atomic orbitals. Okay, what you'll get the wave function of your energy of your atom. Okay, but solving this is a little bit tricky. Okay, so what we can do, so in order to solve this one, what I'll say, I have my h. Okay, my h is what? My h is minus h cut square 2m del square plus v naught r. Okay, so what I'll do, I'll write here instead of v naught r, I'll write r minus rn. Okay, and then again, so v naught is already r, so v naught r. Okay, and minus, you to again subtract this term, so I can write this is v naught r minus rn. Okay, so I can break now, I can break this Hamiltonian. Okay, so I can split this Hamiltonian, and I can say this Hamiltonian h is equal to h naught plus h1. Okay, where this part is h naught and this part is your h1. Okay, now I have to calculate the energy eigenvalues. Okay, so what is the formula for expectation value? Okay, shall I rub this one? Isko rub kar dena? Yes, sir. Okay, so now I have to write energy eigenvalues. Okay, so what is energy eigenvalue? Ek. So my Ek will be, Ek क्या होता है? psi star k r, okay, into h. Okay, और h को मैंने लिख दिया h plus h1 और h naught plus h1. Okay, psi naught k r. Okay, and upon I can write this one psi k r star psi k r. Okay, now just put the values of wave function. Okay, now first what we'll do, first we calculate what is the value of this one. So this is easy. Okay, so what is the value of this? Atomic wave functions are normalized. Okay, so we have to see the crystal potential. Okay, so what is the normalization constant value? Okay, so what is normalization constant? So if I want to calculate this normalization constant, okay, psi star k r. Okay, now psi k r, okay, dr. Okay, so what I can write wave function as, because we have psi k star and psi k. Okay, so I can write instead of psi k star k, I can write m. Okay, n integration psi k, not psi k. Now we have psi naught r minus rm. Okay, and psi naught star r minus rn. Okay, dr. ठीक है, I have substitute the value of your wave function, and iota एक टर्म और भी थी इसमें, एक टर्म और थी iota की टर्म और थी. So I can write m
n and here iota k rn minus rm. ये दिख रहा है ना? इस iota rn minus rm, because our wave function was what? Iota k rn. Okay, psi naught r minus r naught. Okay, now I have put this value और summation को बाहर ले लिया मैंने. Now let me know what is this. सर ई को डिफाइन किया है. कहाँ डिफाइन? ई कौन सा ई? ई के नीचे में. बी ये तो फॉर्मूला होता ही है ना. एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ओह फॉर्मूला. हाँ, यस सर. नाउ ये क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे जब मैंने लिखा है इंटीग्रेशन में, ये क्या बताता है? साई स्टार साई आर माइनस आर एम आर माइनस आर एन. ये तो एनएच एटम है, ये एमएच एटम है. ओके, साई स्टार साई क्या होता है? साई स्टार साई साई स्टार साई बेसिकली क्या होता है? किसमें किसका कितना पोर्शन है? ओवरलैप. ओके, so this is overlap integral. Okay, so just now I told you we have these atoms. Okay, so these are atomic wave functions. Okay, which are generally exponentially decreasing. Okay, now these are atoms. Okay, so each atoms you have orbital wave functions. Okay, so there is a hardly any overlap. Okay, there is hardly any overlap. So the overlap, wherever there is overlap, that should be 0. Okay, so what I can write here, overlap, so I can write here this term. Okay, integration psi naught star r minus rm, okay, into psi naught star r minus rn dr. Okay, that will be equal to canonical delta nm. Okay, that means when n equal to m, this value will be 1. दोनों में स्टार लग गया. हाँ, और ये otherwise if n is not equal to m, this term will be 0. Okay, so कि खुद से मल्टीप्लिकेशन खुद में ओवरलैप कितना है? 100% है. ओके, खुद में ओवरलैप 100% है. इसमें इसका ओवरलैप कितना है? एटॉमिक का 0. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन राइट. सो इसमें हमको क्या करना है? खाली r सेम where the m is equal to n, that term you take. Okay, so when I take rn equal to rm, n equal to m, this term becomes 0. Okay, iota k 0, so 1, this become 1. Okay, so इसको रब कर दे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I can rub this thing. Okay, and I can write simply one summation. One I can remove summation. This will be 1. Okay, साउंड चला गया क्या? हाँ. हेलो सर. सर आपका सर आपकी आवाज नहीं आ रही. दे रहा है. कोई कॉल कर दो सर.
Okay, am I audible now? Yes, Yes, sir. sir. So now what I can do, put this value सर आपने यहाँ पर क्या बोला? कहाँ पे? सर ये दो तीन सेकेंड लाइन से हम्म, जो आपने वैल्यूज निकाली वहीं से आप चलिए। भी वो तो एटॉमिक वेव फंक्शन तो नॉर्मलाइज है ना, वो तो खुद से मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो वो तो 1 है। ओके, अब बाहर समेशन है, तो वो टर्म हमको एन टाइम लिखना है, तो उसको मैंने इसको एन के बराबर लिख दिया। सर राइट अगेन। यस सर। अभी हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था दिस इज एम एन, ओके, आयोटा के आर एन माइनस आर एम, ओके, साई ओके, साई नॉट r minus rm, okay, and psi naught r minus rn. Okay, so overlap integral is 0 for other atoms. Okay, so ये तो we can, so only a survival value survive, that value will survive for which m equal to m. Okay, so I write n equal to here. So if rn equal to m, this term becomes 0, e power 0 1. Okay, and this term become what? Rn, okay, psi star r minus rn, psi 0 r minus rn. Okay, so this is a mod of psi square. Okay, that is 1. Okay, so this will give you 1. Okay, now 1 is for how many times? N times. Okay, n times, so this will give you n. Okay, n क्या है? This is what? This is equal to what? This one, dn. Okay, and 1 into dn. A total atoms are n, so this become n. हाँ, और आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रही है अब अभी आ रही है? सर, बीच बीच में रुक रही है, इससे लैग। वाईफाई तो चल रहा है। अच्छा, लेट मी चेक द ओके, ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ना पुट द वैल्यूज, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो हमारे एनर्जी एक्सप्रेशन में। सो नाउ आई हैव EK, so EK is equals to what? Psi star psi k star, okay, h naught plus h1, okay, psi k star r, okay, and this is 1 by n. Okay, now I will split this one. I'll take this 1 by n, okay, psi k star r h naught, okay, psi k r, okay, and then this 1 by n, okay, psi k star r h1 is what? H1 is v naught r minus v naught r minus rn, okay, psi star psi, and this is psi k r, okay, dr. Okay, now this is 1 by n. Okay, now what is the value of this one? E naught. E naught. Okay, so this value is E naught. Okay, very good. पर हमने कोई चीज मिस कर दी है यहाँ पे. This is 1 by n. Okay, and there are summation भी था क्या यहाँ पर? Okay, now put the value of this wave function. Okay, put the value of this wave function. Okay, so you put the value of wave function. I can write this as a n m, okay, and psi की जगह क्या आ जाएगा? psi naught r minus rn, okay, h naught psi naught r minus rm, okay. So
So मैं पहले इसको solve कर लेता हूँ. Okay. So this term again, if you write for n equal to m, okay, n equal to m, so this term will give you what? This term will give you n e naught, okay, n times e naught value, okay. This will give you n times e naught, okay. We are e naught is the atomic energy, okay. So I can write this one, and now we have only thing I have to write this expression, okay, psi k, okay, and psi k again I can write here summation m summation n, okay. So we are just one step away from the last final expression. So I can write this as a expression iota k rn minus rm, okay, and then we have this integration. Okay. So we have this integration, okay, psi naught star r minus rn, okay, and then we have this h1 which is potential. मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, v नॉट r माइनस इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, h1 लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, okay, and then we have this psi naught r minus rm, okay, dr. So this is already solved, okay, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे पास e naught आ गया है, okay. So now only you have to solve this term h1 wala, okay. So in order to solve this term h1, okay, तो यहाँ पे भी दो condition है, when m equal to n and when जब m is equal to 1 n, and when there is a m is not equal to n, okay. So when there is a m equal to n, okay, so when this is a m equal to n, okay, so again I can write this term, okay, this term a multiplication by n, okay, so I can write 1 by n into n, okay, and this term I can write, I will explain you, first let me write, then I'll explain you. Psi naught star r, okay, and we have potential h v naught r minus v naught r minus rn, okay, into psi naught r dr, okay, and this n will cancel and you will have this term, okay, this term, let me call it alpha, okay, minus alpha, okay, let it call this term is minus alpha, okay. So यहाँ minus क्यों आ रहा है? तो bonding state होगी. Okay, so now what is the meaning, what I have done here, okay, so what I did here, one thing, so suppose I have to calculate this psi k r, okay, psi k r, okay, psi k r, that means I have to calculate this psi naught r minus rn and r minus rm, okay. If I put n equal to m, okay, n equal to m, and I fix the position of atom, okay, because we have this crystal, okay, and this is the periodic crystal, so whether I take this atom, this atom, this atom, the contribution of this integration, okay, is same, okay, the contribution of this integration psi naught r minus rn h1, okay, psi naught r minus rm r, so that means this sum, okay, that is the effect, the overlap of atom m to n, okay. So whether this is whether considering this atom or this atom, there will be always same contribution of this integration, okay. That's why I am putting m equal to n, okay, and I'm multiplying the contribution by n. So only now this for an m equal to n, this will be the expression, okay, where I can write this alpha, where alpha is this one, psi naught r v naught r minus v naught r minus rn psi naught r, okay, इसको एक्सचेंज करना है, so I can write this thing, okay. एक Sir. हाँ बोलो.
Can you explain this point once more? So Yes. बता रहा हूँ. Okay, so now what I am doing, okay, I am taking this nth atom. Okay, okay, so yeah, this is sum of nth atoms. Okay, 1 atom, 2 atom, 3 atom, 4 atom, 5 atom, there are n atoms. Okay, now for Yes, sir. this for the sum of this integration, okay, this summation, whether I take atom 1, 2, 3, 4, for all the atoms the contribution is same. Okay, Yes, sir. so what I'll do, I'll choose any one atom. Okay, say Rn, and I'll take Rn equals to 0. I'll take Rn equals to 0. I'm taking one atom, any atom whose position is 0. Okay, and I put Okay, sir. here 0. So this becomes your psi naught R. This becomes your psi naught R. Okay, and instead of Rn, I'm taking a position vector as a 0. Okay, so this becomes 0, Okay. 0, 0, and this contribution since I'm removing this summation. Okay, so I'm multiplying by this n. Okay, now you are so Rn is 0, so I'm writing this one. This will be R. Okay, V naught R. Okay, V naught R and VR. Now just replace this sign. Okay, replace this sign. Okay, and this will be minus alpha. Okay, now similarly, if when I have to consider when m is not equal to n. Okay, when m is not equal to n. Okay, in that time also I need to solve this thing. Okay, and the value of this expression, okay, will come out again 1 by n, okay, beta minus beta, okay, into exponential iota k dot rm. Okay, now again I'm doing same thing. Okay, I'm removing I'm removing this summation, multiplying by this expression by n. Okay, now what I'm doing, I am considering the effect of nearest neighbors. Okay, now I cannot remove this term because rm is not equal to rn. Okay, so I'll keep this term and multiply this term n, and with beta, just मुझे लिखने दो, लास्ट में मैं क्लियर करता हूँ. Then my beta, okay, my beta is minus beta is equals to psi naught star r minus rm. Okay, vr v naught r psi naught r dr. Okay, so at final, when I solve these things, okay, my energy expression ek, my energy expression for ek from tight bind approximations, okay, they come out as E naught minus alpha minus beta, okay, exponential iota k r m. Okay, so this is my final answer. Okay, final expression for the band diagram for tight bind approximation. Okay, so now here what is your rm? Okay, rm is your nearest neighbor, the position of nearest neighbor atom. Okay, क्या मतलब है इसका? Suppose I have a linear chain of atom. I have a linear chain of atom. Okay, and this is my atom. Okay, this is lattice constant A. This is lattice constant A. Okay, now if I want to write my energy expression for this linear chain, so what I can write? I can write Ek, okay, E naught minus alpha minus beta, okay, summation position rm is क्या है? A. If this position is 0, x is equal to 0, this is position A, and this is position minus A. Okay, this position is x is equal to A, and this position is minus A. So I can write this as a e power iota k, okay, plus e power minus iota k, okay, and this term
I can write ek is equal to E naught minus alpha minus 2 beta cos k. ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ. And summation में, because we have only two terms, okay, two terms, okay, so we are writing this way, iota k सर plus ये एक्सप्रेशन हम मिडल वाले एटम के लिए लिख रहे हैं ना? हाँ cos k. मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Okay, now this is our expression for tight bind approximation. Okay, इतना याद रखना है. Okay, E naught is constant, energy of atomic orbital. Okay, alpha beta also constant. Okay, overlapping extent of overlapping बता रहे हैं. Okay, so this is constant. Now in एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ओके, उसमें हमारे लिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है. ओके, ये टर्म क्या बताती है कि आपको जब भी आपको आरएम क्या है, आरएम इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ नियरेस्ट नेबर. Tight bind approximation, what we do in tight bind approximation, we only consider the effect of nearest neighbor. Okay, तो अगर जैसे ये वन डायमेंशनल चेन है, ओके, तो इसमें नियरेस्ट नेबर कितने हैं? दो. वन डायमेंशनल में आपके हमेशा नियरेस्ट नेबर दो ही होंगे. ओके, तो अगर मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो एक का ए होगा, एक का माइनस ए होगा, isn't it? अगर मुझे Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे आर एन लिखना है तो क्या मैंने लिख दिया पोजीशन वेक्टर के ए, एक बार लिख दिया के ए लिख दिया, एक बार माइनस ए लिख दिया, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिया. तो दिस बिकम माय इके रिलेशन फॉर लीनियर चेन ऑफ एटम. ओके, सिमिलरली if I have a cubic crystal, okay, suppose if I have a cubic crystal, if I सर have a इसमें कौन से एटम को x इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट देना है, ये हमारे हाथ में है ना? भी हाँ, अभी हमको नियरेस्ट नेबर निकालना है, ठीक है, नियरेस्ट नेबर. अब वो एटॉमिक चेन है तो हर एटम के दो नियरेस्ट दो ही नेबर होंगे, तो जिसका जिसके जिसके जिस पे हम कंक्लूड कर रहे हैं, जिसका नियरेस्ट नेबर निकाल रहे हैं उसको 0 मान लो और बाकी के कोऑर्डिनेट्स लिख दो आप. ओके सर, ओके सर. Okay, now for example we have a simple cubic crystal, simple in simple cubic crystal, how many are nearest neighbor? 6. 6. कैसे 6 होते हैं? ओके, सपोज आई हैव अ क्यूबिक क्रिस्टल. ओके, तो सपोज एक एटम यहाँ पर है मेरे पास, तो नियरेस्ट नेबर का मतलब नियरेस्ट नेबर मतलब लेटेस्ट कांस्टेंट के बराबर डिस्टेंस. ओके, सो दिस इज एटम, एक एटम ऊपर है, एक एटम नीचे, दो, एक एटम इस साइड है, दिस इज परफेक्ट क्यूब. ओके, दिस इज क्यूब, दिस इज नाउ नॉट cube. Okay, so this is a perfect cube. We have one atom here, one top, one down, one this side, one this side. Similarly, perpendicular to board. Okay, और इसके पीछे board के पीछे एक. So there are 6 atoms in the case of cubic crystal. Okay, now what are the coordinates? If I want to write the coordinates for simple cubic crystal, so I can write what is the value of Rm. So what is the value of Rm? So the value of Rm is what? Plus minus a 0 0. Okay. Similarly, I can write 0 plus minus a 0. ये दो हो गया, दो ये हो गया, ठीक है, and 0 0 plus minus a. So these are the coordinates of nearest neighbor. Okay. Now you have the nearest neighbor. Now calculate करो cubic crystal के लिए energy band diagram का expression. Let's calculate. सर इसमें kx ky kz को सेम लेना है कि अलग ले लो. So if
going to write this one, okay, for cubic crystal, this will be EK E naught minus alpha minus beta. Okay, now here I can write what, this summation. Okay, so this summation, okay, I can write iota kx, okay, kx plus jky plus kz, okay, and rm. So if you put these values here, okay, if you put this, तो ये RM का coordinates था, मतलब nearest neighbor का yeah, coordinates. nearest neighbor coordinates है E naught minus alpha minus beta. Okay, so if you solve this one, I can get this as a 2 beta, okay, cos kxa plus cos ky, let's assume A, okay, and cos kz a, okay. So I can write this expression for simple cubic crystal. This for simple cubic. Okay. Now, if I want to calculate the width of band, okay, अगर मुझे band का width calculate करना है, so what I can do, I can calculate the maxima of band and minima of band. Okay, so minima of band कहाँ पर आएगा? So at the bottom, okay, so take for minima, take kx ky kz equals to 0 and calculate the e minimum. So e सर minimum, ये लास्ट सेंटेंस क्या बोला सर आपने? ये मुझे बैंड का विड्थ कैलकुलेट करना है. अब ये मेरा ई के डायग्राम है ना, अब मुझे टॉप ऑफ द बैंड कैलकुलेट करना है, टॉप ऑफ और बॉटम ऑफ द ई के मिनिमम कैलकुलेट करना है एंड ई के मैक्सिमम कैलकुलेट करना है क्यूबिक क्रिस्टल के लिए. तो ई मिनिमम कितना होगा? ई मिनिमम कहाँ पे होता है जब हम बैंड ड्रॉ करते हैं? ओके, तो ई मिनिमम कहाँ पे होता है? इस जगह पे होता है. Origin पे. equals to 0. ओके, फर्स्ट बिलियन जल्दी बात कर रहा हूँ मैं. ओके, सो इफ यू पुट 0 हियर, व्हाट यू गेट? ई नॉट माइनस अल्फा 1113 माइनस 6 बीटा. ओके, सिमिलरली ई मैक्स कितना आएगा? ई मैक्स कहाँ पे आता है? pi by a. Pi by Plus a. minus Yes. pi by a. Yeah. So put the values of pi by a. Okay. So E max क्या आ जाएगा? Your E max will be E naught minus alpha plus 6 beta. Okay. This is the top of the band. Top of the band. Top of the band we have kx is equal to pi by a, ky equals to pi by a, and plus minus pi by kz equals to plus minus pi by a. Okay, so now if I want to calculate the width of band, okay, so the width of band will be E max. Okay, E max minus E minimum, that will be what? How much? 12 beta. Okay, so this width will be 12 beta E max upon minus E minimum. Okay, this is for simple cubic crystal. Now same thing you can do for your BCC, body centered cubic crystal, and face centered cubic crystal, FCC. Okay, so now this is homework for you. You have to calculate the bandwidth for BCC crystal, okay, and FCC. So सबसे पहले तो आपको BCC में नियरेस्ट नेबर पता होना चाहिए. ओके, 8 और FCC में 12. So you write the coordinate and calculate the width of band. कितना किसने करा हुआ पहले? कितना आता है width? कितना आता है?
आई थिंक 12, 16, 24 ऐसे कुछ आता होगा। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क। डेप्थ का तो नहीं पता बट वो मतलब ई मिनिमम तो सब में ही 0 होगा बट ई मैक्सिमम। सो कैलकुलेट करो और होमवर्क है करके भेजो मुझे। नाउ देयर आर सम वेरी इजी प्रॉब्लम आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स। ओके, तो एक दो एग्जाम का प्रॉब्लम भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, so this is the gate problem. Okay, so gate 2019. Okay, so gate 2019 और गेट और नेट, ओके, दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो लेट मी फर्स्ट डू इट फॉर नेट। ओके, सो नेट में क्वेश्चन पूछा है, they are given dispersion relation ek equals to alpha cos kx a, okay, plus beta cos ky a plus gamma cos kz है। okay, so they are given this relation, okay, and they're asking where a is a lattice constant, alpha beta are constant, dimension with energy. So they're asking the effective mass tensor at the corner of the billion zone. Okay, you have to calculate effective mass tensor, okay, at position is given you pi by a, 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 pi by a. Okay, so इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है? सो h कट स्क्वायर डेल टू ई बाय डे के स्क्वायर। ओके, सो ये तो वन डायमेंशन में है। ओके, सो अगर थ्री डायमेंशन में है देन योर effective mass will be what? A tensor quantity. So it has a 9 component. Trimester will be what? This will be m xx, okay, m xy, m xz, okay, m yx, m yy, and m yz. Okay, here zx, m zx, m zy, and m zz. Okay, so there will be 9 components और m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? What is the formula for m? Okay, and the formula for m will be what? If I want to calculate mij, okay, so I write h cut square del 2 upon del k, del ki, del upon del 2 k, kj and e. Okay, so this will be your formula. My expression is given to you. Calculate the tensor for effective mass. सर एक बात समझ में नहीं आई सर, जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो डेल के आई और डेल के जेड सर दो ही कंपोनेंट लेते हैं। दो का है, 9 कंपोनेंट है ना? नहीं सर, जो आपने फॉर्मूला लिखा ना एम आई जे, हाँ, तो इसमें क्या ये या तो मुझे एम एक्सेस करना है या एम एक्स वाई करना है या जो भी तुमको लिखना है ना, भी 9 कंपोनेंट है ना ये, एम एक्स एक्स, एम वाई वाई, एम जेड जेड। तो अगर जेड एम एक्स है तो ये आई भी एक्स, जेड भी एक्स, जेड जेड है तो ये जेड जेड आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते जाओ बस, जो भी डिफरेंशिएट करना है सर। हाँ हाँ, डिफरेंशिएट करना है आपको बस। Just 5 minutes. You want any work? सतीश सर चले गए, मिथिलेश सर उधर बैठे हैं।
सो बस इस एक्सप्रेशन को दो बार डिफरेंट कर दो. इफ यू वांट mxx, तो इसको दो बार विथ रिस्पेक्ट टू kx के डिफरेंशिएट कर दो इसको. So if you do it, so if you want suppose mxx, okay, क्या आएगा? h cut square upon here, so alpha, okay, एक बार करेंगे तो क्या आएगा? alpha sin kx a, so a से मल्टीप्लाई हो जाएगा. and if I do one time more, okay, so minus cos का sin minus again sin का cos, okay, so this will be what? alpha a cos का किया तो मैंने माइनस आ गया, माइनस h कट स्क्वायर cos sin kx, sin का किया तो फिर cos, okay, this become cos kx a l square. ये आ रहा है क्या? mxx पूरा आंसर निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है. ये सारे कंपोनेंट कैलकुलेट करो और बताओ कि टेंसर का मैट्रिक्स कितना आ रहा है. क्वेश्चन ठीक है. So it's coming h cut square a square minus alpha. Now put the value. Sir, हाँ, h cut square by a square 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma and all others are 0. yes yes correct. okay, तो अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है kx इक्वल टू पाई बाई a पे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mx will be your h cut square alpha a square. okay, similarly if you want to write myy, that will be h cut square beta a square. okay, similarly if you want to write mzz, that will be h cut square gamma दे रखा क्या? gamma a square. okay, so other components if you calculate that will be 0. okay, so your answer will be h cut square a square 1 by alpha 0 0 0 1 by beta 0 0 0 1 by gamma. okay, so this is given as a option A. okay, so this is the correct answer. now same ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे आस्क इन गेट. ओके, इसको रब कर दूं मैं. यस सर. तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चंस है. ओके, आपको आपसे एक्सप्रेशन भी नहीं लिखवा रहे हैं, मतलब टाइट मेंटेन का एक्सप्रेशन भी नहीं लिखवा रहे हैं, खाली आपको क्यूबिक क्रिस्टल के जो भी एक्सप्रेशन जो दिए गए एग्जाम में सब क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ही हैं. ओके, अगर 3 बार कॉस 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 आ रहा है तो उसका मतलब समझ लो कि क्यूबिक क्रिस्टल के लिए है वो. एंड देन ईके, तो ईके इज गिवन -2t cos kx a plus 2 cos kx half kx a, okay, and multiplied by cos, okay, root 3 by 2 ky a. okay, so this is given you. Now they have given 2 dimension. okay, 2 dimension they are given and there are 2 terms. okay, let me check question if the question is correct or not. so this is gate. ठीक है, so this is kx a by 2 and cos 3 by 2 cos under root 3 by 2 ky a. okay, so this is the expression is given and now you need to calculate
Now they say the expression for Mij is equal to h cut square t a square alpha 0 0 alpha. So what is the value of alpha? Okay, they want value of alpha. अभी 2 डायमेंशन में ही है, खाली kx ky है, तो चार क्वांटिटी चार ही टर्म्स आएंगी, तो अल्फा का वैल्यू निकालो. Sir, there should be some cross term, ना? क्योंकि kx ky मल्टीप्लिकेशन में है तो क्रॉस टर्म भी रहना चाहिए. क्रॉस टर्म मतलब मैट्रिक्स में. ये ऐसा है, ठीक है, हाँ सर. -2. तो सर जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्रॉस टर्म रहेगा ना? सॉल्व तो करो, करके दिखाओ कितना आ रहा है. क्रॉस टर्म क्या आएगा? जस्ट मैट्रिक्स निकालो बस, चार एलिमेंट का. अच्छा, उसमें k का वैल्यू तुम बोल रहे हो, k का वैल्यू. So ये kx और ky की कौन सी वैल्यू के लिए लिख रहे हाँ, जस्ट सो वो दे रखी है. Electric constant units in this electric spectrum at the center of the billion zone has the form. Okay, center of the billion zone का मतलब क्या हो गया कि 0 kx 0 ky 0 2 डायमेंशनल है. ओके, 2 डायमेंशनल लैटिस है, तो सेंटर में क्या हो जाएगा? kx ky 0. So kx ky 0. Sir, alpha is 1/3. 1/3 आ रहा है. बाकी लोग का आ रहा है. सो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. द अल्फा इज 1/3. सुल्तान आ रहा है क्या? यस सर. हाँ, ठीक है. So let me write one more question. Okay. So this time they have given this dispersion relation. Okay, quite long dispersion relation. Pk equals to -4 E naught cos of kx a by 2. Okay, cos of ky a by 2. Okay, plus cos of ky a by 2 and cos of kz a by 2 plus cos of kz a by 2 and cos of kx a by 2. Symmetric है. Okay, this expression is given. Okay,
where A is the lattice constant, E naught is the constant with energy dimension. You're asking what is the x component of the velocity. You're asking x component of velocity Vx. You're asking Vx, okay, at the position, at the k position pi a 0 0. ओके, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर एनर्जी दे रखा है तो 1/h का dEd. यस, ओके, सो वी कैलकुलेट व्हाट v is 1 upon h cut d upon, सो ऑप्शंस क्या हैं? हाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, सो ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसके, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो तुम लोग, ठीक है पूरा. सो a is minus 2 e naught a upon h cut, b is 2 e naught a upon h cut, and c is minus 4 e naught a upon h cut, and the d is option is 4 e naught a upon h cut. ओके, निकालो. D not a. सी वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला सर, लास्ट वाला है. ओके, लेट मी चेक. Option D. डी है. क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, होगा आंसर, कोई मुश्किल तो नहीं, हो जाएगा. ओके, सो आंसर क्या है? 4 e naught a upon h cut. ओके, सो 4 बीटा a. ओके, होगा आंसर. ओके सर इसमें Vx पूछा है ना, हाँ तो हाँ हाँ, तो क्या we करोगे? will तो differentiate with respect to x only. हाँ, x only, k x only. Okay sir. हाँ ठीक है, आंसर ठीक है. 4 e naught a upon h cut, डी आंसर है. ओके, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर्स के देखो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब जहाँ पे कुछ अलग चैलेंज हो. सारे ऐसे, सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही है. आपको एनर्जी डायग्राम दे रखा है, या तो इफेक्टिव मास पूछा है, ओके, या फिर कुछ वेलोसिटी पूछा है, या कुछ ऐसे कुछ चीजें निकाली है, या ब्लॉक वेव फंक्शन के क्वेश्चन पूछे हैं. ओके, सो इनको करने की कोशिश करो. सो नाउ ये हमारा बैंड थ्योरी कंप्लीट हो गया है. नाउ रिमेनिंग टॉपिक्स आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड सुपर कंडक्टिविटी. ओके, तो जब भी वो टाइम टेबल होगा देन विल स्टार्ट. एनी क्वेश्चन? यस सर. तो ये क्वेश्चन सारे जितने किए करके देख लेना. अभी तो जितना कराया है उसमें से तुम्हारा 80% क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए एग्जाम के, सारे जितने पेपर्स हैं सब हो जाने चाहिए. सर ओके सर. हाँ हाँ, सर मेरा तो 2 आ रहा है सर. डिफरेंशिएट तो करना है, करके देखो एक बार. ओके सर. के एक्स से के वाई कौन से छोड़ना है, बस जो के एक्स की, जहाँ के एक्स की टर्म आ रही है वहीं पे डिफरेंशिएट होगा, बाकी तो 0 हो जाएगा. सर आ गया सर. ठीक है, सो स्टॉपिंग Okay, हियर. sir. थैंक यू सर. थैंक यू.